Bismillahirrahmanirrahim. This video is related to our final year project. The name of my final year project is Deep Learning for Automated Chest X-ray Analysis, a Diagnostic Revolution. The group members are Muhammad Hamza Sajjad, Muhammad Munir, Shanzakul and Asna Rabil. Our supervisor is Dr. Faisal Rahman. Now move to the introduction. The project aimed to develop an automated diagnostic system for analyzing X-ray image using CNN. It provides healthcare professionals with rapid, reliable diagnostic results through a web-based application. The system focuses on detecting disease like pneumonia, tuberculosis, and COVID-19 using datasets like NIH chest X-ray and Chexpert. It reduces radiologist workload, minimizes human error, and ensures a consistent and accurate diagnostic. Now move to the problem statement. Manual analysis of X-ray image is slow, resource intensive and prone to human error, especially in high pressure environment. The lack of consistent diagnostic tool leads to delay in treatment and potential misdiagnosis. Move to the proposed solution. Employ CNN with transformer learning using pre-trained model like exception for accurate and efficient disease detection. Develop a user-friendly web application to integrate the trained model, enabling healthcare professionals to upload X-ray image for analysis. The system will generate diagnostic report with confidence scores and visual heat maps highlighting critical area for further examination. Now move to the benchmark. This slide shows the comparison between our proposed system, traditional analysis by doctors, and existing automated tools. Let's go through the features one by one. Real-time analysis. Our system gives instant result, unlike slow traditional methods. Next, accuracy. We achieve over 90% accuracy, better than traditional and some existing tools. Now, disease detection. Our system detects pneumonia, tuberculosis, and COVID-19 all together. Heat map visualization. We highlight affected area using heat map, which others don't offer. User-friendly interface. Our web app is simple and easy for anyone to use. Confidence scores. We show how confidence the system is about its prediction. Next, scalability. Our system handles many users and large data easily. Then processing speed. We provide fast analysis within seconds. Now move to the objective and goals. Develop a web-based system for real-time and automated diagnostic of disease from X-ray image. Leverage deep learning models to achieve high accuracy, reliability, and efficiency in disease detection. Provide diagnostic result with visual indicators, for example, heat map, to aid healthcare professionals in clinical decision making. Now move to the project feature: real-time analysis, visual indicators, diagnostic confidence scores, and user-friendly interface. Now move to the system flow diagram. This diagram shows how chest X-ray analysis system works. First, X-ray images are collected and pre-processed, then used to train a model, deep learning model. When a doctor uploads a new X-ray through the web app, the model gives a prediction and generate a report. The report helps doctor quickly understand the patient condition. Next, move to stakeholders. Stakeholders are healthcare professionals, radiology, patients, and IT support teams. In healthcare professionals, doctors, radiologists, and clinicals who will use the system to enhance diagnostic accuracy and efficiency. Then radiology department, hospitals, and diagnostic centers that will benefit from faster, more reliable diagnosis, especially in a region with limited access to specialized radiologists. Then in patients and IT support teams. Now move to the constraint challenges. It's mean data quality challenges in acquiring high quality labeled X-ray data sets, computational resources, requirement for GPU enabled system for training and real-time predictions, then model generalization, ensuring the system works across diverse patient demographics and equipment. Move to the project timeline Gantt chart, in which we in November to December we start our project, and alhamdulillah finally we complete our project in June to July 2025. Now move to the backend of our project, जिसमें हमने अपनी डिफरेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई थी. उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोड डाटा सेट. हमने जो अपना डाटा सेट लिया था वो डिफरेंट कैगल के अकाउंट से लिया था. जैसे मैं अब आपको भी चेक करवा देती हूँ कि हमारे पास जो इमेजेस थी उसको हमने
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. फर्स्ट पार्ट इज़ टेस्टिंग एंड देन इज़ ट्रेनिंग, इन विच टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड फर्दर वी डिवाइडेड testing and training into four categories for this. You can see COVID-19, normal, pneumonia and tuberculosis. Then move to the data visualization, in which visualize the data according to the categories. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नॉर्मल है, कोविड-19 है, तो हमने किस तरह विजुलाइज़ किया. तो हमने अपने डाटा को इस तरह विजुलाइज़ किया था कि अगर हमारे पास 500 डाटा है या कोविड-19 है, उसकी पिक्चर्स हमारे पास 19 है, और 1500 अगर ट्यूबरक्लोसिस, तो हमने उसको किस किस तरह डिवाइड कर दिया. देन मूव टू द डाटा प्री प्रोसेसिंग. इसके अंदर हमने क्या किया था, बैच साइज़ हमने फिक्स कर दिया था. इमेज साइज़ हमारे पास 299 था, और उसके अलावा हमने इमेज डाटा जनरेटर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया था. देन हमारे पास ट्रेनिंग थी, वैलिडेशन थी, और उसके बाद टेस्टिंग थी. देन मूव टू द pictures. There are some sample pictures, pneumonia, COVID-19 and tuberculosis etc. Then move to the model building, जिसके अंदर हमने exception net import करवाया था. उसके बाद हमने flatten यूज़ किया था, drop out, dense and then drop out. Now move to the model training, इन विच हमने अर्ली स्टॉपिंग यूज़ की थी. इसमें हमारे पास EPOX 20 जो है वो हमने रन करवाई थी, और उसके बाद हमने इसके अंदर पेशेंट्स तो 5 रखा था, और इसको हमने रिस्टोर बेस्ट वेट्स को ट्रू रखा था. देन मूव टू द मॉडल एवेल्यूएशन, जिसके अंदर हमने 11 ईपॉक्स रन करवाई थी, जिसमें हमारे पास ट्रेन लॉस, ट्रेन एक्यूरेसी, वैलिडेशन लॉस एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, और जो हमारे पास बेस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी अचीव हुई थी ट्रेनिंग के दौरान, वो हमारे पास 97.89% हमारे पास जो थी वो एक्यूरेसी अचीव हुई थी. देन मूव टू द model training and validation accuracy. Now move to the front end of our project, in which we use the Flask, HTML and CSS is used to create the front end. Now we run the project, and we have a link, local link. This is the local link. Now it's open by control and click. This is the front page of our project. Key features of the systems, our mission, a simple 3-step process. Now move to the detector. अब हम अपनी एक इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, और हमें पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितने % एक्यूरेसी हमें देता है. इट गिव्स 99.79% कॉन्फिडेंस. इसमें हमारे पास ये बता देगा कि हीट मैप के थ्रू कि हमारे पास ये एरिया जो है वो डिफेक्टेड है, या इस एरिया में हमारे पास डिजीज़ है. नो मूव टू द पेज अबाउट प्रोजेक्ट. The challenges, workflow, data collection, model training, evaluation and tuning, web development, and then now move how it works. सिस्टम फ्लो डायग्राम, जो मैंने भी आपको अपनी स्लाइड में बता चुकी हूँ कि हमने सबसे पहले वही डॉक्टर मॉडल को पिक्चर देगा, देन वो हमें प्रिडिक्ट कर देगा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा सेट्स. इसमें ट्रेनिंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्टिंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें वो हमें बताएगा कि हमने किस किस तरह हमने अपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है. जैसे हमारे पास अगर नमूनिया का डाटा है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो हमने कितने कितने इमेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. नाउ मूव टू द मॉडल रिजल्ट. टेस्ट एक्यूरेसी 98.8%, टेस्ट प्रिसीजन 98.83%, टेस्ट रिकॉल 98.78 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी 97.78. This is visual analysis, overall accuracy comparison, detailed test performance, training and validation accuracy over time, training and validation loss over time, and this is the confusion matrix of our project. Now, thank you so much. I hope this is very informative for you.